Hello. Today I'm looking for buy or sell opportunities. If Nifty breaks 70 levels by one close, then I'll look for a buy opportunity. Stop loss will be one low. If Nifty doesn't break 70 by 0.16070 by one close, then I will look for sell opportunities. My stop loss will be one high or day high. Same goes for Bank Nifty. I'll follow the same trend as Nifty. If Nifty breaks 16070, I will look for buy opportunities. I am on the buy side today because the data is still bullish. But let's see, if it doesn't cross VWAP till one close, then I wouldn't really want to buy, and I look for sell with very small stop loss. निफ्टी में मैं बाय अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ. अगर निफ्टी 070 तोड़ देती है 1 बजे 1 o'clock क्लोज के तक, और अगर नहीं तोड़ती तो मैं 1 क्लोज को मैं भेज दूंगा. स्टॉप लॉस रखूँगा 1 हाई. अगर तोड़ देती है 1 लो, स्टॉप लॉस रख के मैं बाय कर लूँगा. बैंक निफ्टी में मैं वही कर रहा हूँ जो मैं निफ्टी में करूँगा. निफ्टी देख के मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूँगा. थैंक यू.